गुड मॉर्निंग गाइस। एक फ्रेश स्टार्ट के साथ दिन की शुरुआत हो रही है। Then I was organizing my studies table because it was very mess around that. And I found the best app for class 11 student where you can get all the questions, PYQs, and many more. In the last of the video, I'm going to share the link of the app. Just download it. लैपटॉप सेटअप डन, नोटबुक रेडी, और अब निकालते हैं क्लास 11 की फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशंस के डीपीपी, जो मुझे अपने लेक्चर्स खत्म होने के बाद करने थे बट मैंने उस टाइम किए नहीं थे। तो देखते हैं कितने कॉन्सेप्ट दिमाग में बचे हैं। अपने फेवरेट पिंक पेन निकाल लिया है क्योंकि ऑनेस्टली क्यों स्टेशनरी से मुश्किल न्यूमेरिकल्स भी थोड़े कम पेनफुल लगते हैं। यूनिट कन्वर्सेशन थोड़ा ट्रिकी होता है बट कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ही इसका एकलौता सोल्यूशन। And I know I don't post regularly or I don't post short regularly because in class 11 we are so focused in studies, what we record, what we do. Things are very different now. What we used to do in class 10 and what we are doing in class 11, there are big cues different in that. मैंने ये चैनल 2021 में बनाया था जहाँ मैं एडिट्स, स्टेशनरी वीडियोस, सैटिस्फाइंग वीडियोस एंड बहुत कुछ पोस्ट करती थी। मेरे इन वीडियो पे 1 लाख व्यू भी गए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी एंड आई वाज ऑल फोकस्ड ऑन द राइट वीडियोस। बट नाउ थिंग्स आर वेरी चेंज। Back in 2025, I deleted all my videos because things were really messed up. But I started again. I thought this time it will be different. I will share my honest journey with you all, and I hope you all guys love my video. And now quick fuel break. गरम गरम खिचड़ी और पापड़ पढ़ाई के बीच में सिंपल भी बेस्ट लगता है। राजवन सर का फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है और ऑनेस्टली ये जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा लगता है। और ऑब्वियसली 2x स्पीड तो मैंडेटरी है। लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी को भी पैरेलली रीड कर रही हूँ ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन या पैरा मिस ना हो। So here it is, the app. It's called Class 11th Exam and it is best for your use. I will give the link in the description. Please go check it out. And that's all for today's video. Bye bye.